Good morning, students. I'm your business study teacher, Ms. Silky Gupta. Students, how was you all? Students, we had done the meaning of controlling, what is the process of controlling, features of controlling, importance of controlling. Now, today we will do the techniques. We had already done the traditional techniques of controlling, and today we will do the modern techniques of controlling. What are the modern techniques? Modern techniques are used nowadays. जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं आजकल के टाइम पे यूज़ होती हैं व्हेन ट्रेडिशनल टेक्निक्स बिकम एब्सोल्यूट. जब ट्रेडिशनल टेक्निक्स हमारी पुरानी हो जाती है देन वी विल यूज़ द मॉडर्न टेक्निक्स. दे आर more effective than the traditional techniques. So let's get started, student. The first one is return on investment. Every company brings some investment in the organization. What is the investment? Investment consists of fixed asset and the working capital used in the business. What is the investment? जो भी कंपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस में जो फिक्स्ड कैपिटल वर्किंग कैपिटल जो लेके आती है दैट इज द इन्वेस्टमेंट. सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन वांट दैट देयर इन्वेस्टमेंट गिव्स देम अ गुड रिटर्न. वी डू द इन्वेस्टमेंट. हमको इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? वाई वी डू द इन्वेस्टमेंट? सो दैट वी कैन गेट द रिटर्न फ्रॉम देम, कि उससे हमें कुछ रिटर्न मिले पॉजिटिव, राइट? एंड दैट रिटर्न विल बी काउंटेड एज अ प्रॉफिट. उसको हम अपना प्रॉफिट कंसिडर करते हैं, राइट? सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन वांट दैट देयर इन्वेस्टमेंट गिव देम गुड रिटर्न्स. सो हायर द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट से हमें रिटर्न मिलेगा, हायर द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इट मीन्स द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज गुड. Lower or the negative return on investment means the financial position of the organization is not good. So what an organization is do, he will compare the current return on investment with the previous year return on investment. जो हमारी इस साल की जो रिटर्न हो रही है इन्वेस्टमेंट से आ रही है उसको हम क्या करते हैं, पिछले साल के प्रीवियस ईयर के रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के साथ कंपेयर करते हैं. चेक करते हैं कि इस बार ज़्यादा है या पिछली बार ज़्यादा है, पिछली बार से इस बार हमें ज़्यादा रिटर्न हुई है कि नहीं. इफ़ करंट ईयर रिटर्न इज हायर देन द प्रीवियस ईयर रिटर्न, इट मीन्स आवर फाइनेंशियल पोजीशन इज गुड. बट इफ आवर करंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन द प्रीवियस ईयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इट मीन्स आवर फाइनेंशियल पोजीशन इज नॉट गुड. In that case we need to be control, हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, राइट? So this is the return on investment means investment. What does investment means? Means fixed asset, a working capital that we are using in the business. Every organization want that their investment give them a good return. If they are giving us positive return, then we consider it as a profit. So organization compare current year return on investment with the previous year return on investment. Then ratio analysis. Ratio analysis can be used to find out and analyze the financial statement. Ratio analysis हम कब यूज़ करते हैं? We use to find out and analyze the financial statement. इससे हमें अपनी financial statements के बारे में पता चलता है. We get to know about our financial statements. Ratio analysis helps to understand profitability, liquidity, solvency position of a business. The ratio analysis helps us to understand what is the profitability ratio, what is the profitability position of the organization. Profitability means how much organization is earning the profit. Is its profit ratio is good enough or not? Now liquidity. That liquidity ratio means short term solvency, how we meet our short term creditors. हम उनके जो डेट हमने देने हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स को हमने जो भी पे करना है, हमारी पोजीशन कैसी है कि हम उसको कितनी जल्दी हम उनको रिटर्न दे रहे हैं उनका, कि जो उन्होंने पैसा हमने जो क्रेडिटर से पैसा लिया है
हम उसको कितनी जल्दी वी आर रिकवरिंग देम, राइट. What is the solvency ratio? The second one is solvency ratio. It means how fastly we recovering the long term debtors. हमने जो लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स हैं उनको हम कितनी जल्दी रिकवर कर रहे हैं ना. एंड द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मीन्स प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैसी है. देन थर्ड वन इज PERT एंड CPM टेक्निक्स. PERT स्टैंड फॉर Program Evaluation and Review Technique, and CPM is Critical Path Method. Various activity in this case, various activities, sub-activity which will be performed in sequence and in given time. इसमें हम क्या करते हैं, we in organization various activities, sub-activities will be arranged in a sequence and in a given time. जो भी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज सब एक्टिविटीज़ होंगी हम उसका पर्टिकुलर सीक्वेंस बनाते हैं और उस कितने टाइम पे वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही है हम वो भी नोट डाउन करते हैं इन अ गिवन टाइम. देन आइडेंटिफाई क्रिटिकल पाथ. इन दिस we divided the activities according to their sequence and the given time. Now we will identify the critical path. Critical path means the longest path. The activity which take most time will be and whose activity is the longest will be considered as a critical path, right. Why we are using the PERT and CPM techniques? To minimize our cost, to minimize our time and cost. Now the responsibility centers. What is the responsibility accounting? In responsibility accounting, it is a system of accounting in which different sections, different division, departments of an organization are set up as a responsibility center. Organizations, various department, various section, various subsections are set up as a responsibility center. जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट होंगे उसको हम एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर एलोकेट कर देते हैं, उसको हम एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर उसको हम बोल देते हैं. देन द हेड ऑफ दैट डिपार्टमेंट, हेड ऑफ दैट रिस्पॉन्सिबल सेंटर will be responsible for all the activities of their department. The responsibility center का जो भी हेड होगा वो अपने अपने टारगेट को अचीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा अपने डिपार्टमेंट के, अपने सेंटर के, लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर ऑफ प्रोडक्शन, तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा, राइट. देन मैनेजमेंट ऑडिट. What is the management audit? It is the management audit is done for the management purpose. In this we evaluate the performance of our management. इसमें management की performance को evaluate किया जाता है. In this we examine the critically examine the process. What process? Which process? Management process, which is planning, organizing, staffing, directing and controlling. These all the process of the management is critically examined by the expert. Management, all the management process is examined by the expert. He will check the efficiency of this process कि कितना efficiently ये जो functions थे, ये जो process थे वो perform किया गया है. So what he does, the expert collect the data regarding this planning, organizing, staffing, directing and controlling and gives the conclusion about the management. The next one is management information system. In order to control the organization properly, the management need accurate information. What is the management information system? It is the system in which we have all the data, all the information regarding our company or management, right? So what does MIS does? In
कंट्रोल द ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली कंट्रोल करने के लिए मैनेजमेंट को कंट्रोलिंग हमने करनी है. फॉर दैट पर्पस मैनेजमेंट नीड इंफॉर्मेशन विच मस्ट बी एक्यूरेट. सो MIS प्रोवाइड दैट इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट. MIS collect the information from various department, various organization, from various activities. He collect the information and then provide the solution. If there is any deviation, any defaults, then he also provide the solution. What MIS does, it collect the data, it process the data, provide the information to the managers. Right? So these are all are the modern techniques of controlling. I hope student you understand it very well. Still, if you have any kind of doubt and query, then you can call me between 5 to 6 p.m. Thank you.